देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप मैंने कौन सी एक्सप्लेन की, क्लीनिंग, देन सेकेंड इज अ थिनिंग एंड देन राइजिंग, और लास्ट है रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस द साइज ऑफ ट्री, जो साइज ऑफ ट्री होती है उसको रिड्यूस करते हैं, ऑफन फॉर अ क्लियरेंस ऑफ यूटिलिटी लाइन, reducing the height or a spread of a tree is best accomplished by a pruning back the leaders and branches terminal to lateral branches that are large enough to assume the terminal role at least one third the diameter of the cut stem। वहाँ पे कितना कट होता है, at least one third the diameter of the cut stem compared to topping reduction help maintain the form and structural integrity of the tree। reduction किस में help करता है, maintain the form and structural integrity of the tree। then advantages of thinning include better air circulation। यहाँ पे थिनिंग का एडवांटेज दिया हुआ है, तो एडवांटेजेस ऑफ थिनिंग, थिनिंग क्या है, जिसमें सिलेक्टिव ब्रांचेस रिमूव होती है ना, सिलेक्टिव ब्रांच रिमूव ऑफ ब्रांचेस। सो एडवांटेज क्या होगा उसका, एडवांटेजेस ऑफ अ थिनिंग इंक्लूड बेटर एयर सर्कुलेशन। अगर हम सिलेक्टिव ब्रांचेस ही कट करें तो वहाँ पे सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन बेटर होता है। देन इम्प्रूव सनलाइट पेनिट्रेशन, ओके, एंड लेस विंड रेजिस्टेंस। दीज आर द एडवांटेज ऑफ थिनिंग। समझ में आया सबको? What is pruning and what are the types of pruning? यस मैम, समझा। ये टाइप ऐड करेंगे फिर, तुम्हारे इसमें है नहीं, नोट्स में है नहीं ये पॉइंट। मैं सेंड करके रखूंगी व्हाट्सएप पे, अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। प्रॉनिंग के बाद टाइप ऑफ प्रॉनिंग, ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉनिंग स्टार्ट करना है। समझे? हाँ। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रॉनिंग? बेनिफिट क्या है प्रॉनिंग का? तो प्रॉनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर ट्री। अ प्रॉपर प्रॉन is both an investment in the long term health of your plant and in the overall look and safety of your property। Okay, so principle of pruning is of two types। one is the principle of stem pruning and principle of root pruning। दो टाइप के प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रॉनिंग के। वन इज अ स्टेम प्रॉनिंग, अनदर इज अ रूट प्रॉनिंग। मैंने अभी प्रॉनिंग एक्सप्लेन की, व्हाट इज प्रॉनिंग, बोलो। Removal or reduction of a certain parts of a plant. राइट, देन टाइप्स एक्सप्लेन की। नाउ आई स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉनिंग। ओके, स्टेम प्रॉनिंग, फर्स्ट पॉइंट इज अ रिडक्शन इन ग्रोइंग पॉइंट्स। So reduction in growing point, stem pruning reduces the number of growing point of any given plant। growing point, reduction in growing point, stem pruning reduce the number of growing points of any given plants, then increases in nutrients। stem pruning करने से क्या होता है, increase in nutrients। these increases the supply of available nitrogen।
इंक्रीज करता है वो सप्लाई ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द लिमिटेड ग्रोइंग पॉइंट्स. ओके. देन सेल डिवीजन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ स्टेम प्रोनिंग. Cell division increase. These increase the number of cell and utilization of carbohydrate. Okay. Then next is fruit formation. Increases the cell number. Work in fruit formation. Fruit formation में भी helpful होता है stem pruning because it increase the cell number. Work in fruit formation. Then diversion of nutrients. Diversion of nutrient, carbohydrate, nitrogen element. Sap means sap. Sap is a watery fluid of plant, right? So carbohydrate, nitrogen element means sap. Okay. So sap is diverted to fruiting area of the plants. बिकॉज ऑफ स्टेम प्रॉनिंग वहाँ पे क्या होता है डाइवर्जन होता है न्यूट्रिएंट्स का मीन्स कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन एलिमेंट sap is diverted to fruiting area of the plants. Okay. This is principle of stem pruning जिसमें मैंने 5 points explain किए. First is a reduction in growing point, then increase in nutrient, cell division increase होता है, then fruit formation, and last is a diversion of nutrients. The next principle is a root pruning. So reduction in growing point, but यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टेम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं रूट. ओके. सो रिडक्शन इन ग्रोइंग पॉइंट. रूट प्रॉनिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ एनी गिवन प्लांट. सेम पॉइंट्स है. सेल डिवीजन इन डिक्रीज होगा यहाँ पे और स्टेम में क्या होता है सेल डिवीजन इंक्रीज होता है. दिस डिक्रीजेस द सेल डिवीजन रेट एट अ टिप ऑफ रूट्स. जैसे हमने स्टेम में क्या देखे यहाँ पे सेल डिवीजन इंक्रीज हो रहा है स्टेम के अंदर. दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टेम प्रोनिंग. बट रूट प्रॉनिंग में क्या होगा सेल डिवीजन डिक्रीज होगा. दिस डिक्रीजेस द सेल डिवीजन rate at the tip of roots. Then next point is a conservation of carbohydrate. Conservation of carbohydrate, it promotes the supply of carbohydrate in stem. Promote करता है supply of carbohydrate in stem cell only to fruit cells. It promotes the supply of carbohydrate in stem cell only to fruit cell. Then next is improve fruit quality and quantity. अगर हम रूट प्रॉनिंग करते तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्रूव होती है उससे फ्रूट क्वालिटी एंड क्वांटिटी. दस रूट प्रॉनिंग फेवर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दैट इज फ्रूट क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ओके. So four principle of root pruning is a reduction in growing points, then cell division decreases, conservation of carbohydrate, and last is improve fruit quality and quantity. Okay. समझा सबको इतना यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज प्रॉनिंग देन टाइप्स ऑफ प्रॉनिंग और फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉनिंग देयर आर टू प्रिंसिपल. वन इज अ स्टेम प्रॉनिंग एंड अदर इज अ रूट प्रॉनिंग. और हमको अब उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं. ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर ऑफ प्रॉनिंग. ओके. समझा इतना. यस मैम. हाँ मैम.